हाँ सीटा करेगी शट डाउन करके ऑफ कर दे तो ठीक है सीटी आसिले जो ये क्लिक कला पर आसे गोटे अच्छा सेठी सो हेलो एवरीवन आज आम स्टार्ट करिया जाऊँ आमर फर्स्ट क्लास सीडीपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रे जहाँ को आम टार्गेट करूँ कौन ना बीएड एंट्रांस 2026 को तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एग्जाम साथी ऑल एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल आपने आसतु जॉइन करूँ आ गोटे बेस्ट फैसिलिटी सहित बेस्ट फैकल्टी मान पाखर गोटे यूनिक वे रे लर्निंग करूँ आउ एंजॉय को पूरा लर्निंग लर्नफुल करूँ एंजॉयमेंट वाला करनी चलतु आज स्टार्ट करवा किसी क्लास किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आम करने जाऊँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन फास्ट आगु आम गोटे बैच लॉन्च कर नागार्जुन बैच बोली कहूँ जोटा कि रहा फाउंडेशन बैच फॉर ओडिशा बीएड एंट्रांस एग्जाम 2026 एंड 27 बहुत गुटे नॉमिनल प्राइस रे आपण मानक पई एटा अवेलेबल कराई छि जोथरे कि आपण माने बेस्ट फैसिलिटीज मानक द्वारा गुटे यूनिक लर्निंग एनवायरनमेंट रे एन्जॉयफुल आकार शिखि परिबे तेणु जॉइन करंतु आउ निजर बीएड रो स्वप्नटा को जने टीचर होवार स्वप्नटा को निश्चय भाव में पूरा करंतु तो किछि क्वेश्चन आमे आरंभ करिबा आमर एठी किछि एजुकेटर जो माने पढाउछन्ती सब्जेक्ट क्लास टाइम एछि समस्त चेक करिवे आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु ऐप भी डाउनलोड करंतु जेमति कि टाइम टू टाइम आपण माने अपडेट पाई परिवे समस्त तो लेट्स बिगिन विथ टुडेस आवर फर्स्ट क्वेश्चन गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टीचिंग इज ए स्किलफुल एप्लीकेशन of knowledge, experience, scientific principle, all of the above. कहतु टीचिंग गोटे स्किलफुल एप्लीकेशन knowledge, experience, scientific principle ना all of the above कौन है वो आंसर यार anyone D obviously all of the above कहीं ना हमें पढ़ीचु हमको टीचिंग स्किल ले हमको नॉलेज भी दरकार एक्सपीरियंस भी दरकार आउ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी दरकार देले हमें गुटे कौन करि परिबा ना टीचिंग टाको गुटे बढ़िया से करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय अंडरस्टैंडिंग टीचिंग बिहेवियर एट हाउ मेनी लेवल्स आमे तीनटा लेवल रे टीचिंग टाको डिवाइड करछु से तीनटा लेवल कौन कौन तीनटा लेवल इटाला तीनटा लेवल बट से तीनटा लेवल कौन कौन से तीनटा लेवल होची हम गोटे लिखिबा फर्स्ट हैला कोन ना टीचिंग स्किल सेकंड लेवल हमें कौन कहूछु जनरल टीचिंग बिहेवियर आ थर्ड रे कौन आछी हमरो स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर ए तीनटा हमर कौन रहउची ना तीनटा टीचिंग लेवल गुटे ला टीचिंग स्किल गुटे जनरल टीचिंग बिहेवियर आ गुटे ला स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर तो एटा को निहाती जानिबा दरकार ए तीनटा ये डिटेल्स से जानिया चाहूँ पढ़ा चाहूँ पूरा बढ़िया से निजर स्वप्नटा को पूरण करने चाहूँ निहाती भाव में आमर जो बैच नागार्जुन बैच स्पेशली क्रिएट कराई आपण मानी निहाती भाव में जॉइन करूँ गोटे बहुत नॉमिनल प्राइस रे बेस्ट फैसिलिटी सहित लर्न करूँ तो ये तीनटा स्किल निहाती भाव में समस्त मन रखिए जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन days are necessary to bring about the realization of set of instructional objective कोठी रे आमे गोटे जिनसर रियलाइजेशन आनी परिबा कोठी टीचिंग स्किल रु टीचिंग मेथड्स रु ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द अबव कोटा हबो सी बोथ ए एंड बी नो आमर कौन हम ना टीचिंग स्किल
टीचिंग स्किल है जो हमारा करेक्ट आंसर टीचिंग स्किल आर नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन आमे जो पाठ पढुछु तार उद्देश्य आमे जो बीडी एंट्रांस दबु गोटे स्वप्न नहीं आसु कोन पई आमे आगो को जाई कि जने टीचर टे होबु सेटा हमर मूल लक्ष्य हम उद्देश्य सेटा टीचिंग स्किल टा ही रियलाइजेशन आने टीचिंग आने टीचिंग मेथड तो परे आसीबो टीचिंग स्किल हला यार करेक्ट आंसर होछि Teaching can be analyzed in terms of teacher behavior at least at 3 levels. They are कौन मु ऑलरेडी तीनटा लेवल कथा कहि सारी छी से तीनटा लेवल कौन कौन समस्त कहबेनी तीनटा लेवल कौन रहइबो ए क्वेश्चन आंसर दवा समस्त जो तीनटा लेवल मु कहली से तीनटा लेवल कौन कौन रहइबो सेटा हमर रहइबो कोन ना ऑप्शन नंबर सी टीचिंग स्किल जनरल टीचिंग बिहेवियर एंड स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर ए तीनटा हमर स्किल रहइबो लेवल रहइबो Following the analysis at what level, teaching can be defined as a set of component skills for the realization of a specified set of instructional objectives. एटा हमको को लेवल रे कुहा जाई छी जोटा कि कुहा छी what teaching can be defined as a set of component skills for the realization of the specified set of instructional objective मोटा कहि दउची एटा हला कोन ना टीचिंग स्किल टीचिंग स्किल एटा को हमें कहि थाउ तो मते कहंतु जो टीचिंग स्किल टा को लेवल रा आस्था है टीचिंग स्किल टा हमरो को लेवल रा आस्था है पिला माने आंसर द वाइडर ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट लेवल वेरी गुड एमती क्लास रे पूरा एमती मजा मस्ती रे पढ़िबा जॉइन निहाती भाव रे करंतु निजर स्वप्न को निहाती भाव रे पूर्ण करंतु at which level teaching skills can be defined as a set of interrelated teaching behaviors for the realization of specific instructional objectives एठी कोन कहला गुटे टर्म ना interrelated teaching behavior for the realization of specific instructional objectives तो आराम से जानी पारुथु ए क्वेश्चन रुई एटा कोन होबो रियलाइजेशन केते बेले आसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रो नो स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर हे थाए सेटा को हमें कहि बुझ पाले who has or have defined the term teaching skills as a set of related teaching behaviors which in specified types of classroom interaction situations tend to facilitate the achievement of specified types of educational objectives एटा की कहितले हमकु ए जो डेफिनेशन टा डायरेक्टली डेफिनेशन पिला माने पढ़ी थाए जंती आगो को भी अछि हमर क्वेश्चन टागोर कोन कहितले एजुकेशन को नेकी तो एटा किए देथिले हमर निहाती और मन रखियो एटा किए देथिले ना मैक्लेंटायर एंड व्हाइट बोथ दुई जन जाको साइकोलॉजिस्ट ए डिफाइन टा करिथिले एजुकेशन को नेकी ठीक अछि क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन who of the following consider teaching as a personal relationship between teacher and taught आमे कहा को कहि थाउ ना taught हला स्टूडेंट taught आमे कहा कहि थाउ ना स्टूडेंट्स मान को कहि थाउ causing behavior modification एटा किए कहिथिले हमको सिक्स नंबर आउथरे बुझांतु ठीक अछि एटा आंसर दे दियंतु देन पुनी करिया एटा किए देथिले who of the following consider teaching as a personal relationship between teacher and taught causing behavior modifications आंसर करंतु
चलो ए क्वेश्चन टा मु आपन मानको होमवर्क रखुची आपण माने एटा हमको निहाती भाव रे कमेंट रे जणैबे तापर हमें नेक्स्ट क्लास रे यार आंसर रिवील करिया ठीक अछि एटा निहाती भाव रे कमेंट रे समस्त जणैबे हमको जे एटार को के देथिले यार डेफिनेशन टा तो तुम 6 नंबर टा बुझिबा तरे at which level teaching skills can be defined as a set of interrelated teaching behaviors for the realization of specific instructional objectives आमे को टीचिंग स्किल लेवल रे आमे कहूचू जेटा गोटे इंटररिलेटेड टीचिंग बिहेवियर बोली इंटररिलेटेड माने सेठी रे बोथ आउ टीचर एक्टिव थिबे आउ टीचर माने रेस्पॉन्स करूथुबे आउ पिला माने जेडी एक्टिव थिबे नियाती काहे कि ना जते बेले स्टूडेंट माने एक्टिव रील पार्टिसिपेट करिवे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे सेते बेले टीचिंग लर्निंग टा कोन हे परिबो इफेक्टिव भी होबो सक्सेसफुल भी होबो तो एटा को लेवल रे कुहाइतिला ना एटा गुडा हम स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर रे कुहाइतिला काहे कि ना ए लेवल रे टीचर कोन करंती पिला को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करंती से पिला को देखंती कि पिलाटा केते इंप्रूव करूची तार को प्रॉब्लम अछि को जागा रे ताकू से मॉडिफाई भी करंती बुझि पाले ओटा के हम रेमेडियल टीचिंग बोली कहि थाउ तापर रेमेडियल टीचिंग अनुसार हम कोन देई थाउ डायग्नोस करथाउ सेही कथा हटी हमें कहिछु तो एटा निहाती मते होमवर्क रे कमेंट रे समते जणैबे ठीक अछि टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड टॉट हु स्टेट दिस एटा किए कहिथिले हम टीचिंग गुटे प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड टॉट टीचर और स्टूडेंट मान को भीतर गोटे इंटरेक्शन एटा किए कहिथिले हमको हेमिडन ग्रीन क्लर्क ना नॉन ऑफ द अबव किए कहिथिले ए डेफिनेशन किए देथिले ठीक अछि एटार आंसर दवा समझते क्वेश्चन नंबर 9 टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड टॉट हु स्टेट दिस समझते Teaching is a process of interaction between teacher and taught. Who stated this? तो एमती एग्जाम रे एमती एग्जाम रे पड़िबो सबु बुझि पाले एग्जाम रे डायरेक्ट डेफिनेशंस पचारे किए देथिले बोली तो याकू डिटेल रे थ्योरेटिकल रे पढ़िबा आवश्यकता अछि तो ता पई निहाती भाबरे माने जॉइन करबे निहाती तो एटा को हमें किए कहिथिले एटा को हमको एमिडन कहिथिले बुझि पाले who of the following stated that teaching should be done in a natural environment किए हमको कहिथिले ना टीचिंग शुड बी डन इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट समस्त आंसर दबा यस वेरी गुड एटा को हमको किए कहिथिले ना टैगोर कहिथिले टैगोर माने रविंद्रनाथ टैगोर हमको एटा कहिथिले ना टीचिंग शुड बी डन इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट राइट वेरी गुड व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जो फास्ट और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कौन रहा दरकार आमे पाठ पढ़ार फास्ट उद्देश्य कौन रहा दरकार समस्त आंसर देबे टू इम्पैक्ट नॉलेज ओनली टू डेवलप स्किल्स that can help learners to solve their real life problems to give lectures in the class na none of the above first objective first उद्देश्य कौन रहा दरकार हम पाठ पढ़ा बी यस ये कौन करिवो टू डेवलप स्किल्स दैट कैन हेल्प लर्नर्स टू सॉल्व देयर रियल लाइफ प्रॉब्लम सबले मन रखिबे पाठ पढ़ाटा जते रियल लाइफ सहित रिलेटेड रहिबो सेते इजीली पिलांको द्वारा लर्न होबो आ सेते इफेक्टिव भी होबो बुझिले ए जो ओनली वर्ड एगुडा सब नेगेटिव वर्ड आ मन रखंतु
पेडागोजी रे केबे नेगेटिव वर्ड एक्सेप्टेबल नो सब बेले ऑप्शन ले खोजिया चेष्टा करिवे कोउटा पॉजिटिव अछि आ एग्जैक्टली सेटा ही आपन मानकर आंसर हेतै ठीक अछि तो ऑप्शन बी हे हमर करेक्ट आंसर specific teaching behavior can be brought about by specific teaching behavior कहा द्वारा आसीबो specific teaching skill द्वारा by reading from a book द्वारा ना imitating other को द्वारा ना all of the above कौन हो यार आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 समस्त आंसर दो 12 नंबर एटार आंसर हो कौन ना स्पेसिफिक टीचिंग स्किल द्वारा आम स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर को कौन कर परिबा ना आनी परिबा खाली बही धरिकी पढ़िले क्लासटा कौन हो बोरिंग हो निहाती गप भलिया हो तापर इमिटेटिंग अदर अन्य को कॉपी करिबा काहे कॉपी करिबा सब बेले यूनिक हबा हेलो हेलो गुड इवनिंग तो सब बेले कौन हो स्पेसिफिक टीचिंग स्किल द्वारा स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर आम आनी परिबा स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर कौन कौन रोची आम पिला को डायरेक्टली ऑब्जर्व करूछु पिला क्लास रे कौन पढुचंती कौन तांगर प्रॉब्लम अछि ताको से तो डायरेक्ट आम इंटरेक्शन करूछु बुझी पारले ए सब होइता हम स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर तो एटा स्पेसिफिक टीचिंग स्किल द्वारा ही पॉसिबल हो पारे टीचिंग एप्टीट्यूड मींस टीचिंग एप्टीट्यूड माने कोन devotion towards teaching work to desire to become a teacher all the requisite abilities to do the job of a teacher question number 13 yes 13 number c कोन एटा ना all the requisite abilities to do the job of a teacher एटा को हमें टीचिंग एप्टीट्यूड बोली कहि थाउ एटा मन रखी 14 नंबर क्वेश्चन आपन मान को सामने रे ओके ओके important aspects of teaching aptitude is teaching aptitude one important aspect kono na the capability of the teacher to let the students realize the truth the capability of the teacher to check the creativity of his students the capability of the teacher to make student vocation oriented the capability of the teacher to make teaching student oriented कोउडा हबो टीचिंग एप्टीट्यूड रे सबटु इंपोर्टेंट कोन क्रिएटिविटी स्टूडेंट को चेक करिया बट दैट इज नॉट करेक्ट आंसर है कोन ना ऑप्शन नंबर डी द कैपेबिलिटी ऑफ द टीचर टू मेक टीचिंग स्टूडेंट ओरिएंटेड आमे जते पिल्लांकर इंटरेस्ट नै की पाठ पढेबा पिल्लांकर एज नै की पाठ पढेबा सेते पाठ पढाटा इफेक्टिव होबो आ मीनिंगफुल रहइबो बुझि पारले तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टीचिंग दा स्टूडेंट ओरिएंटेड होबा दरकार देले जाय की पिल्ला भीतर आमे क्रिएटिविटी भी आनी परिबा तांकू जो ट्रुथ से माने केमिति एक्सपेरिमेंट करि परिबे सेटा भी सिखै परिबा आगो को वोकेशनल ट्रेनिंग कोन नेबे सेटा सिखै परिबा बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज टीचिंग दा स्टूडेंट ओरिएंटेड होबा दरकार द ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉलेज शुड बी हमर जो एटीट्यूड हम बिहेवियर नॉलेज पई केमिति होबा दरकार ना टू एक्सेप्ट व्हाट इज प्रूव्ड बाय साइंस ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस not to accept anything that is not personally verified to accept as the final truth to accept believing in the scope of improvement कोउडा हवा दरकार एटीट्यूड हमर को भले हवा दरकार 15 नंबर कोडा वो 15 नंबर समझते आंसर दबा
yes, to accept what is proved by science on the basis of empirical evidence सहित जोटा प्रूफ हेची आमे ताकू एक्सेप्ट करिया ना आमे फाइनल ट्रुथ भाभी तो पारिबानी हमको सबले कोन दरकार रियल सॉल्यूशन दरकार तो सबले ताकू मन रखिबा आ एमती करियानी कि बिलीविंग द स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट एमती एक्सेप्ट करनो जे एई जिंसटा आगो को इंप्रूव हेई पारिबो जे जाय हमें हेइनी से जाय हमें बिलीव करिबा नाही तो ऑप्शन नंबर ए हे हमर करेक्ट आंसर Which of the following statement is most reasonable? Teachers motivate students to acquire knowledge. Teachers are born. Teachers are capable of teaching. Interpretation of a complex theory is very useful for development of thinking process in students. Which of the following statements is most reasonable? एथिरे ई चारटा ऑप्शन लो सबटु अधिक इंपोर्टेंट कोउटा समस्ते कहबे 16 नंबर स्टेटमेंट इज मोस्ट रीजनेबल है कोन ना ऑप्शन नंबर ए हे करेक्ट आंसर ना टीचर्स मोटिवेट स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज से तांको नॉलेज एक्वायर करे पे मोटिवेट करंती तापरे आसीबो कोन ना इंटरप्रिटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स थ्योरी इज वेरी यूजफुल फॉर डेवलपमेंट थिंकिंग प्रोसेस इन स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स थ्योरी एई वर्ड ता गुटे नेगेटिव वर्ड बुझी पाले तो एमिति ही एग्जाम्स रे आपन मानको प्रॉब्लम फेस करिया को सेति पई डिटेल रे पढिबार आवश्यकता नियाती रहिछि बुझी पाले तो फास्ट नॉलेज जदी नथिबो कॉम्प्लेक्स थ्योरी को हम केमिति पढिबा सेति पई टीचर कोन करंती फास्ट पिला को मोटिवेट करंती टू एक्वायर नॉलेज टू एक्वायर द बेस बुझी पाले टू एक्वायर द थ्योरेटिकल नॉलेज तापरे हमें आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व करि पारे हमको पाखरे जो लेवल क्वेश्चन आसी पारे से मीडियम लेवल हे पारे हार्ड लेवल क्वेश्चन हे पारे हम नियाती भाबरे सॉल्व करि पारिया नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन ले कोडा मोस्ट बेनिफिशियल एन अपॉर्चुनिटी टू डोमिनेट द चिल्ड्रन पिला को ऊपर आधिपत्य विस्तार करिया एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ sufficient number of holidays in a year, hefty earnings from tuition work besides earning through salary. समझते आंसर देवे 17 नंबर मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग प्रोफेशन डी डा केमिति हो समझ जो डी आंसर दउचंती hefty earnings from tuition work besides earning through salary माने सैलरी पर भी ट्यूशन करके इनकम करबा एटा कोन गोटे मोस्ट बेनिफिशियल टीचिंग प्रोफेशन रे टीचिंग इज ए नोबेल प्रोफेशन पिला माने तो टीचिंग टा एमिति होबा जमा भी न टीचिंग कोन होबा दरकार एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टीचिंग एमिति होबा दरकार जोथिरे कि हमें निजो को गोटे एक्सप्रेस करि पारुथबा सेही बळे अपॉर्चुनिटी थिबा दरकार बुझी पाले तो ऑप्शन नंबर बी हैला करेक्ट आंसर डोमिनेट हमें पिला को करि परिबा नाही एटा गोटे नेगेटिव वर्ड हे होला तापरे कोन सफिशिएंट नंबर ऑफ हॉलिडेज इन ईयर मन इच्छा हॉलिडेज नहीं परिबा नाही एना से सब रे लिमिटेशंस थाए जे केतेटा वर्किंग डेज होबा दरकार केते दिन हॉलिडेज होबा दरकार बुझी पाले यस यस ऑप्शन नंबर बी किछ असुविधा नहीं aptitude is a condition or set of characteristics regarded as a symptomatic of an individual's ability to acquire with training some usually specified knowledge skill or set of responses such as ability to speak a knowledge to produce music etc is the speaker एटा हमको किए कहिथिले ए डेफिनेशन टा सब बेले कहिछि डेफिनेशन सब बेले इंपोर्टेंट तेनु पूरा थियोरेटिकल नॉलेज प्रॉपर रखिबे कोन तो एटा किए देथिले हमको ना एटा हमको बिंगम देथिले बिंगम ए डेफिनेशन हमको देथिले समस्त मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए ही होची हमर करेक्ट आंसर who said that aptitude embraces any characteristics which is predisposed to learning including intelligence achievement personality से कोन कहिथिले ना इंटेलिजेंस भी रहिबो
अचीवमेंट पर्सनालिटी भी रहिबो इंटरेस्ट रहिबो एंड स्पेशल स्किल्स रहिबो किए कहिथिले एटा समस्त आंसर दबा एटा को 19 नंबर किए कहिथिले यस एटा को हमके कहिथिले ना अलेक्जेंडर जी वाइजमैन हमको ए डेफिनेशन देथिले निहाती भाबरे मन रखिए dash is a symptomatic or suggestive of one's ability for a particular work or job एटा कोन नॉलेज एप्टीट्यूड ना एटीट्यूड ट्वेंटी नंबर आंसर दवा समझते dash is a symptomatic or suggestive of one's ability for a particular work or job 'attitude' no 'aptitude' is a symptomatic or suggestive of one's ability for a particular work or job बुझी पाले 'attitude' कोन 'attitude' हला हमर आमे केमिति अन्य को जज करूछु हमर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स केमिति रहिछि दैट इज आम 'attitude' बुझी पाले यस ऑप्शन नंबर बी 'aptitude' 'aptitude' is how many types aptitude is how many types समस्त कहबे aptitude is how many times पिला माने समस्त आंसर करिया aptitude is how many times types aptitude हला sorry aptitude हला हमर कोन ना टू टाइप्स कोन कोन अछि फर्स्ट वन इज positive aptitude second one is negative aptitude दी प्रकार aptitude हमर अछि उटेला positive aptitude आ उटेला negative aptitude बुझ पाले तो aptitude दुई प्रकार निहाती भाबरेडा मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए हेउछि हमर करेक्ट dash is the capacity to acquire proficiency with a given amount of training in teacher education knowledge power of reasoning teaching aptitude na none of the above dash is the capacity to acquire proficiency with a given amount of training in teacher education question number 22 समस्त उत्तर दो good evening 22C very good teaching aptitude is the capacity to acquire proficiency with a given amount of training in teacher education बुझी पाले चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन aptitude test is used to measure success measure proficiency to indicate success in any task या measure the capacity or capability आमे aptitude test कोन पई करिताउ कोन पई यूज करिताउ ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर aptitude test is used to indicate success in any task कहीं कि ना aptitude रो हमको कोन जणा पड़े पिलार केते इंटरेस्ट अछि यदि पिलार सेही जिंसर इंटरेस्ट थिबो से जिंसडा को निहाती करि परिबो
बुझी पाले टू मेजर द कैपेसिटी नहीं सक्सेस इन एनी टास्क जोतरे कुआ गला इंडिकेट करूथबो से जदी सक्सेस आड़ को जाउची माने ता पाकर निहाती कैपेसिटी थिबो कैपेबिलिटी थिबो आपण माने समस्ते बीएड एंट्रेंस में प्रिपरेशन करूछु यदि प्रिपरेशन करूछु हम भितरे सही कैपेसिटी रहिची कैपेबिलिटी रहिची टू एक्वायर द नॉलेज टू गेन द नॉलेज राइट सेति तो हम एटी ये करछु ना एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड माने कोन गोटेटा इंटरेस्ट माने एबिलिटी टू डू ए पार्टिकुलर जॉब और टास्क से जिनस ना इंटरेस्ट थिबा दरकार दैट इज एप्टीट्यूड बुझी पाले गोटे हला एप्टीट्यूड गोटे हला एटीट्यूड एटीट्यूड कोन हमर से जो इंटरेस्ट अछि सेटा को हमें केमिति यूज करूछु जदि हम पाखरे पॉजिटिव एटीट्यूड थिबो ताले हमें कोन करिबा जिनस रे आगे चलीबा प्रोसेस अनुसार आगे चलीबा सिस्टमैटिक वे रे जीबा किंतु यदि नेगेटिव एटीट्यूड हम भितरे थिबो ताने हमें कोन करिबा से जिनसटा को सेठी धरि बस जीवा हम द्वारा होउनी हम पाठ जते पढुचे हम द्वारा सिलेक्शन ही होउनी हम एतिकी मार्क रे रहि जाउचे सेतिकी मार्क रे रहि जाउचे एमती न ताए पॉजिटिव माइंडसेट रहया दरकार आ सब जिनस रे मूव ऑन करके आकु बढ़िया दरकार एप्टीट्यूड माने हला कोन जे हमर उडे इंटरेस्ट और एबिलिटी टू डू ए पार्टिकुलर जॉब और टास्क सेटा कि से काहे कि हम सेटा को यूज करि दाउ टू इंडिकेट सक्सेस इन एनी टास्क काहे कि ना उडे पार्टिकुलर जॉब पई हम रेडी अछु कि नाही ए जे टीचर होबा पई हम रेडी अछु कि नाही सेठी हम एप्टीट्यूड टेस्ट करि दाउ बुझ पाले यस साइकोलॉजिस्ट डिफाइन dash as a learned tendency to evaluate things in a certain way एटा समझते कहबे साइकोलॉजिस्ट कहा को डिफाइन करि जंदी गुटे लर्न टेंडेंसी टू इवैल्यूएट थिंग्स इन अ सर्टेन वे निजो वे रे एटा कोन एटीट्यूड एप्टीट्यूड ना नॉलेज ना नॉन ऑफ द अबव कोडा हो साइकोलॉजिस्ट डिफाइन एटीट्यूड एज ए learn tendency to evaluate things in a certain way बुझ पाले एटीट्यूड नॉट एप्टीट्यूड एठी हमको एटीट्यूड कथा कहै छी गुटे सर्टेन वे रे नबा पई हला साइकोलॉजी डिफाइन करछन एटीट्यूड गुटेटा हम एटीट्यूड जेमिति थिबो हम सही लाइन ले जीवा बुझ पाले यदि हम पॉजिटिव एटीट्यूड हम भितरे थिबो ना हम सब जिंस रे हार न मानि की आगु को बढ़ी चलीबा हमर मिस्टेक्स रु किछि सिखिबा पुनी सेटा को केमिति आगु को सेम मिस्टेक न होबो केमिति सक्सेसफुल हेई परिबा सेटा को भाबिबा बुझि पाले तो एटीट्यूड डिपेंड करे एटीट्यूड according to dash an attitude is a mental and neural state of readiness organized through experience exerting a directive or dynamic influence upon individuals response to all objects and situation with which it is related eta kiye koithile gordon alport फ्रैंक फ्रीमैन थॉर्स्टोन किए कहिथिले एटा कहिथिले ना हमर गॉर्डन अल्पोर्ट कहिथिले कोन कहिथिले ना अकॉर्डिंग टू गॉर्डन अल्पोर्ट एन एटीट्यूड इज ए मेंटल और न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस एटीट्यूड हमर केमति आसे एक्सपीरियंस रु आसे एक्सर्टिंग ए डायरेक्ट और डायनामिक इन्फ्लुएंस रु आसे अपॉन द इंडिविजुअल्स रेस्पॉन्स टू ऑल ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन with which it is related आमे केमिति रेस्पॉन्स करूछु आमे फॉर एग्जांपल ओडे एंट्रेंस टेस्ट देले कट ऑफ वाला हमर 88 आमे रखिलु कि 83 पॉइंट समथिंग कि 83.25 एमति रखिलु सेही जगह हमर एटीट्यूड ता कोन रहया दरकार हमर एटीट्यूड ए रहया दरकार कि सेडु आमे मूव ऑन करी कि आकु बढ़ुछु ना नहीं जो मिस्टेक आमे करिलु ताकु रेक्टिफाई करी कि आकु जाउछु कि नहीं ना सेही मिस्टेक ता को धरि बस जाउछु तो सेही दीटा ऊपर डिपेंड करिवो ना तुम आपण माने कोडा चूज करूछंती सेटा ऊपर चूज करिवो कि आमे आगु को सक्सेसफुल होबा कि नहीं बुझी पाले तो सेति पय सब बेले पॉजिटिव एटीट्यूड रखंतु पॉजिटिव रहंतु बिंदास रही कि गुटे माने लर्निंग जेमति एन्जॉय वाला ही परिबो सेमति सब बेले पाठ पढो तो एया थिला किछि क्वेश्चंस हमरो प्रीवियस ईयर एमति कंटीन्यूअस क्वेश्चन चलीबो समस्ते जॉइन करंतु यस बेटर करिबा आ हमरो सब बैच उडा रहिछि निहाती जॉइन करंतु गुटे बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट 100% गारंटी आपण मानको एठार मिलि जिवो बेस्ट फैकल्टी रहिचंती विथ बेस्ट एक्सपीरियंस सहित रहिचंती जो माने आपण मानको लर्निंग टाको गुटे एन्जॉयफुल करेबे
जोटा कि विदाउट बर्डन विदाउट स्ट्रेस रे आपण माने निजर एग्जाम पई प्रिपरेशन करि परिबे आ सब बेले निजर लक्ष्य को अचीव करि परिबे। आ सब बेले मन रखंतु सब जिंस सब बेले कोन करिवे पॉजिटिव माइंडसेट रखी करिवे। तो निहाती भाव जॉइन करंतु। फास्ट रू कहूची सब बेले कहबी थियोरेटिकल नॉलेज इज मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज बहुत बढ़िया, पीवाईक्यू इज बहुत बढ़िया, किंतु बेसिक टा जानिबा निहाती आवश्यकता अछि। तो बेसिक पई हमरो नागार्जुन बैच बीएड पिलांग पई स्पेसिफिकली बना हिची, बहुत सुंदर भाव रे ताको बना हिची। निहाती भाव जॉइन करंतु आ डिटेल रे पढंतु, बुझि पाले हला बढ़िया से इजी होबो। आ 100% आपण जॉइन करंतु। आपनकर बीएड रे गुटे एडमिशन हमें आपण मानकु निहाती भाव रे देकी ना रहिबो। आ सब मन रखंतु कोन करिवे एतरा सीट वाला सेटा मैंडेटरी नो, हमकु सेथरु गुटे सीट दरकार। सही माइंडसेट रखी प्रिपरेशन करंतु, पाठ पढंतु। 1000टा सीट बाहरु कि केतरा भी बाहरु हमकु सेथरु गुटे ही दरकार, बुझि पाले। निहाती भाव रे एमती कंटिन्यू क्लास करंतु। निहाती भाव रे फीडबैक देबे आपन केमती क्लास लागिला समस्तंकु। आ निहाती भाव रे हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, आ संग मान सहित शेयर करंतु। जो माने टीचर होवार स्वप्न देखुचंती, निजर गवर्नमेंट बीएड सीट गुटे नवा पई स्वप्न देखुचंती, ताको स्वप्न जेमती साकार हे परियो ताको भी हेल्प करंतु। निजे माने भी समस्त बहुत सारा पढंतु। लाइक सब्सक्राइब शेयर निहाती भाव रे करि किछि। निहाती भाव रे चैनल को भी हमरो जॉइन करिवे। थैंक यू। निहाती भाव रे सब्सक्राइब लाइक करिवे, शेयर करिवे, कमेंट करिवे, फीडबैक देबे केमती कोन लागिला सांग मानक सहित निहाती एटा को शेयर करिवे। गुटे जिंस लास्ट रे कहि कि जिबी सब बेले मन रखिवे कोन प्रिपरेशन प्लस प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी। प्रिपरेशन पूरा तगड़ा भाव रे करंतु। देले जते बेले अपॉर्चुनिटी मिलिबो आमे ताकू कोन करिबा, आमे जो प्रिपरेशन टा करिथियो ना सेठी जाई लगेबा पूरा दम। तापरे हमकू कोन मिलिबो, तापरे हमकू सक्सेस मिलिबो। जोटा हमर प्राइमरी गोल हमर ऑब्जेक्टिव सेटा हम उद्देश्य सेटा हमें सक्सेसफुल होबा। तो प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी इक्वल टू कोन मिलिबो हमकू ना सक्सेस। बुझि पाले समझते। तो बिंदास रहंतु, पढंतु। पुणी थरे नेक्स्ट क्लास को जॉइन होबा, निहाती भाव रे जॉइन करिबा आ एमिति आगो को बढ़ी चलिया। तो थैंक यू एवरीवन। बिंदास से रहंतु। निहाती भाव रे हम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आउ निजर पढ़ा को गुटे एन्जॉयफुल करंतु। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे समस्त। हाँ कॉमर्स थिला तो बीएड करंतु ना, किछि असुविधा नै, करि परिबे। आपण एनसीटी गाइडलाइन को देखंतु तापरे करि परिबे, किछि असुविधा।